आर्या इवैल्यूएशन कमेटी के अध्यक्ष और डॉक्टर अभय जेरे, चीफ इनोवेशन ऑफिसर MHRD इनोवेशन सेल, तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यहाँ उपस्थित डायरेक्टर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स. On behalf of AICTE, MHRD and MHRD's Innovation Cell, I heartily welcome you all to this second edition of ARIA, that is ARIA 2020. अटल नवाचार संस्थानों की श्रेणी को घोषणा और पुरस्कार माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से आज होने वाला है. उन्होंने हमारा जो इन्विटेशन स्वीकार किया है उसके लिए हम धन्यवाद अर्पण करते हैं. I thank the Honorable Vice President for sparing his valuable time and be amongst us on such a important festive occasion. It's a sort of celebration of innovation. Sir, the National Education Policy is in place. It talks about 2020, which is going to be a turning point in the education sector, which talks about flexibility, innovation, and collaboration. This ARIA ranking is nothing but an exhibition of that. There are many organizations who have helped us in this initiative, such as UGC, DST, DBT, but more important, the institutions like Infinet, Clarivate Analytics, which take off Web of Science, NBA, and committee headed by none other than Dr. BVR Mohan Reddy, who helped in evaluating the complex data. I think this is nothing but innovation as well as collaboration. Sir, MHRD Innovation Cell was established at AICTE by MHRD 2 years ago to drive innovation. It was based on the previous 2 Smart India hackathons which were conducted by AICTE earlier to solve the problems of the central government, government departments, states, society, industry, urban and rural areas, and all that which we face in day-to-day. Undergrad students were coming out with out-of-the-box innovative solutions, and looking at this, MHRD decided to set up MHRD's Innovation Cell at AICTE. MIC also conducted India-Singapore Hackathon, and now India-ASEAN Hackathon, India-Portugal Hackathon are also in the pipeline. The establishment of innovation councils was undertaken by MIC, and there are more than 1,700 institutions where innovation councils have been established. We give them a weekly program, monthly program for conducting a lot of innovative activities. Motivated more than 8,000 innovation ambassadors, helped in conducting of IPR workshops, startup workshops, patent workshops, support for incubation in the institutions, helping in giving some funding for creating to come. We will be within the top 20s and subsequently within the top 10 in the world. Even during COVID times, sir, we conducted Ideathon, we conducted Samadhan, and a hackathon which is very, very interesting and important. That is, Drug Discovery Hackathon is underway. This year, participation in ARIA has phenomenally increased from the last first edition of 496 institutions to today 674 institutions. The Atal ranking of institutions are done in 6 categories. Centrally funded technical institutions like IITs, NITs and central universities becoming first category. Government, state universities and deemed universities, the second category. The state private universities, the third category. Government aided colleges, fourth category. And fifth category is the private colleges. And lastly, this year we added a new category, which is all women college category. Parameters for evaluation are essentially input-based, process-based, output and outcome-based. And 6 important parameters are budget, in fact, actual expenses, revenue, in terms of supporting innovation and startups. The second one is about patents granted, published and applied. The third one, infrastructure facilities that are available for supporting innovation and permission to use them. Fourth one, technology transfer and commercialization of various
the activities which have been done, which will result in various new innovations. And the fifth one is courses on innovation, IPR, and startups. Lastly, the successful startups which have graduated from the institution and which have helped growing business outside, and such institutions are selected based on the ranking, the marks secured, and we are very happy that this year, as we said, that more than 674 institutions have participated. The culture of innovation is growing. The support of our HRD Minister, Sri Ramesh Pokhriyal the Secretary, the Honorable Vice President, when he is here with us, I think this is a great motivation and inspiration for all other institutions also to join us in our RER rankings next year, and let us start making innovation a part of our life. Thank you. Dhanyavad. Namaskar. Thank you so much, sir. I now invite Chairman of RER Committee and Executive Chairman, signed, Dr. B.V.R. Mohan Reddy, to please address us. Dr. B.V.R. Mohan Reddy, sir. I think there is a connection glitch. I think we should request. Can you hear me now? Sorry, sir. Can you hear me, please? Meanwhile, the technology has its pros and cons. So I would like to request our Secretary, sir, Shri Amit Khareji, to please shed some light on the ranking, sir, please. Hello, welcome to the conferencing system. आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू महोदय, सम्माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश से, उनकी अनुमति से हमारे मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया, इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का भी मैं स्वागत करूंगा। AICTE के अध्यक्ष श्री अनिल सहस्रबुद्धे जी, मुख्य इनोवेशन पदाधिकारी श्री अभय जेरे जी, मंत्रालय के अपर सचिव श्री राकेश रंजन जी और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, अलग अलग संस्थानों के प्रमुख जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन विशेष रूप से शिक्षा के हर क्षेत्र में हमको मिलता रहा है, और आज यह एक विशेष अवसर है कि जो सम्मान अटल रैंकिंग यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में जो आज सम्मानित हो रहे हैं, उसकी घोषणा स्वयं उपराष्ट्रपति जी, जो उनके बहुत ही निकट सहकर्मी रहे हैं, उनके द्वारा हो रही है। मैं समझता हूँ यह सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि द्वितीय अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में स्वयं उपराष्ट्रपति जी द्वारा हमें समय दिया गया है। जैसा कि हम सभी अवगत हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह जोर रहा है, माननीय उपराष्ट्रपति जी ने हमेशा हमें प्रेरणा दी है कि इनोवेशंस को आगे बढ़ाया जाए। हमारे देश का उच्च शिक्षण व्यवस्था केवल टीचिंग तक सीमित नहीं रहे, बल्कि टीचिंग लर्निंग से आगे बढ़कर नॉलेज क्रिएशन, इनोवेशन, पेटेंट्स, और जैसा कि कुछ दिनों पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सभा में हमको संबोधित करते हुए, हम सभी को संबोधित करते हुए कहा था कि अब जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बने हमारे विश्वविद्यालय से निकलने वाले विद्यार्थी, और उस दिशा में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक बहुत बड़ा प्रयास है। और यह प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपस में एक सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, लेकिन कट थ्रोट कंपटीशन नहीं, बल्कि एक ऐसा कंपटीशन में एक दूसरे का सहयोग करते हुए हमारे संस्थान आगे बढ़े। और जैसा कि अध्यक्ष AICTE ने बताया, इस वर्ष अलग अलग कैटेगरी में महिलाओं के संस्थानों की एक अलग श्रेणी बनाई गई है। निश्चित रूप से
यह महिला शिक्षा और महिलाओं द्वारा रिसर्च और इनोवेशन को और बढ़ावा देगी। आज जो यह काम किया जा रहा है, इसका निश्चित रूप से लाभ हमारे विद्यार्थी उठाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ ही, जिसमें काफी बल नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और रिसर्च और इनोवेशन को दिया गया है, उसमें एक कड़ी और जोड़ते हुए जो अटल रैंकिंग आज जारी होंगी, और विशेष रूप से माननीय उपराष्ट्रपति जी की जो प्रेरणा हम सबको और उनका मार्गदर्शन जो हमको प्राप्त होगा, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम और अच्छा करके दिखाएंगे। एक बार पुनः मैं AICTE को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं और माननीय उपराष्ट्रपति जी के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम हेतु अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, Secretary Sir. Again, we would like to try Dr. BVR Mohan Reddy. Sir, Can you hear me now? Dr. Reddy sir, Yeah. Can you hear me, please? can you hear us and speak now? I just want to check whether you can hear me. Can you? No? Uh, yes, sir. You can hear me now? Yes, sir, we can hear you. Thank you. Thank you very much. My sincere apologies for this technical glitch that we had. Honorable Vice President Shri Venkaiah Naidu Garu, Honorable MHRD Minister Dr. Ramesh Pokhriyal Nishangji, Honorable MOS MHRD Shri Sanjay Dotreji, Secretary Shri Ajay Khare, AICTE Chairman Dr. Sahasrabuddhe, Chief Innovation Officer Dr. Abhay Jere. We cannot hear. So you can't hear me? Sorry. Let me also add my note of welcome as the chairman of the evaluation committee of IR ranking. These rankings are being done for the second year in succession. We have seen more amount of enthusiasm in terms of participation, and more importantly, a very sincere attempt by every institution to improve their innovation index. On behalf of the rankings committee, I'd like to congratulate all the award winners and thank others for their participation. Further, recognizing innovation, rewarding innovators, celebrating with awards such as these will further promote innovation and truly realize our nation's dream of Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat, or the self-reliant India, is a vision extremely well articulated by Prime Minister Shri Modi. Atmanirbhar Bharat has 5 pillars, including technology-driven systems. While technology-driven digital transformation was slow in the pre-COVID era, in the past 5 months, we have seen digital transformation all around us. The emphasis on technology-driven systems and possibility to design technology-led solutions gives immense opportunity for innovation. We can be successful with innovation only if we can nurture, promote innovation in our education institutions. The Ministry of Human Resource Development. Welcome to the conferencing system. Please enter the conference number followed by the pound key. I think I seem to have got dropped again. Let me complete. The MHRD has announced a new education policy 2020 with many elements to promote innovation, critical thinking, experiential learning, holistic multidisciplinary learning, with ecosystem of incubators for students to challenge the status quo, take risks, Please address us, sir. This will accelerate and amplify innovation. It is these changes that will orient the mindset of our students and promote innovation to truly
realize Atmanirbhar Bharat. Welcome and thank you. Ask Dhotre sir to address. नमस्कार सम्मानीय जी, शिक्षा मंत्रालय में मेरे शिक्षा मंत्री और मार्गदर्शक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उच्च शिक्षा सचिव श्री अमित खरे जी, AIC के चेयरमैन जी, आर्या कमेटी के चेयरमैन और जगत के लीडर श्री रिया रेड्डी जी, अभय जेरे जी, चीफ ऑफिसर यूनिवर्सिटी, स्वागत करता हूँ और सारे शिक्षा उन्होंने इस रैंकिंग में भाग लिया। आज के समय आप सब इस बात से सहमत होंगे, इनोवेशन एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह हमें सीमित भौतिक व प्राकृतिक संसाधनों से असीमित लाभ हासिल करने की पूंजी देता है। इसे आज आधुनिक विश्व में, विशेषकर भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में सारी मौलिक जरूरतों को पूरी कर पाने व बेहतर जीवन की सुविधाएं मुहैया कराने का मूल मंत्र इनोवेशन है। हमारे भारतीय समाज में इनोवेशन की अभिरुचि हमेशा से सर्वव्यापी रही है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस इनोवेशन के महत्व की पहचाना है और हमारे शिक्षा मंत्रालय ने उनके नेतृत्व में इसे बड़ी गंभीरता से लिया है। MHRD के इनोवेशन सेल की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। इतने कम समय में इस सेल ने देश के इनोवेशन की संस्कृति को विकसित करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, तब मैं आपका ध्यान इस ओर भी ले जाना चाहता हूँ। विकास हमारे लिए हमेशा नए अवसर व सहूलियतों से लेकर आता है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हाल के समय में बड़े तीव्र गति से विकास हुए हैं, जिसके फलस्वरूप पिछले कुछ दशकों में ज्ञान के नए क्षेत्र भी स्थापित हुए हैं। शिक्षा के संचालन में भी कई नए आयाम जुड़े हैं। ऐसे में छात्रों में एक असमंजस की स्थिति भी होती है कि वे अपने लिए उपयुक्त संस्थान कैसे चुने। संस्थानों की भी जरूरत होती है कि ऐसी परिस्थिति में अपनी पहचान कैसे स्थापित करें। ऐसे स्थिति में रैंकिंग एक सर्व स्वीकार्य मानक के रूप में काफी मददगार साबित होती है और ऐसे में रैंकिंग से संस्थानों के बीच एक सकारात्मक स्पर्धा का भाव आता है। क्योंकि रैंकिंग शिक्षा संस्थानों को कई मानकों पर परखती है, इसलिए यह एक बेहतरीन और विस्तृत मूल्यांकन के रूप में इन संस्थानों के समग्र सुधार की योजना का आधार भी बनती है। इनोवेशन के क्षेत्र में उपलब्धियों के पैमानों पर संस्थानों की रैंकिंग एक उत्कृष्ट योजना है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट हमारे छात्र, युवा उद्यमियों और शिक्षाविदों को अपने आकलन का एक महत्वपूर्ण अवसर देता है। हमारी नई शिक्षा नीति ने भी इनोवेशन पर काफी बल दिया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस नीति ने इनोवेशन को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका दी है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो व्यवस्था की गई है, उसके मूल तत्व व उद्देश्यों में इनोवेशन को रखा गया है। ऐसे वातावरण में मैं यह समझता हूँ कि शिक्षा व इनोवेशन के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी आशा और उत्साह के साथ हमें भविष्य में अपने प्रयास और तेज करने होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी और हमारे मंत्री जी को विशेष धन्यवाद देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच धोत्रे सर। और अब एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने गरीबी से उभरते हुए गांव से 7 किलोमीटर पैदल चलकर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और जो न सिर्फ राजनीति में बल्कि साहित्य की दुनिया में भी एक अमिट पहचान बनाए हुए हैं। ऐसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्री
श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिन्होंने राजनीति में रहते हुए 75 से ज्यादा किताबें लिखी, जिसमें काव्य और कथा संग्रह शामिल हैं। बहुत सी रचनाएं उनकी कई भाषाओं में अनुवादित की जा चुकी हैं। माननीय मंत्री जी को कई देशों में सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे प्रतिभावान शिक्षा मंत्री हमको प्राप्त हुए हैं। मेरी प्रार्थना है आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक, शिक्षा मंत्री, भारत सरकार से, कि वह अपने विचार हम सबसे साझा करें। मान्यवर। आज के इस बहुत ही गरिमापूर्ण और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमको अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हुए भारत के यशस्वी उपराष्ट्रपति श्रद्धेय वेंकैया नायडू जी, जिनका मार्गदर्शन एक बहुत लंबे समय से इस देश को मिलता रहा है, और आज एक विचित्र संयोगी है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके महामहिम उपराष्ट्रपति अनन्य सहयोगियों में से शीर्ष पर रहे हैं, आज उस महापुरुष के नाम से जो ये रैंकिंग जो दूसरी बार का आपके हाथों से, पिछली बार राष्ट्रपति जी के हाथों से ये पहला संस्करण हुआ था और आज आपके हाथों से हो रहा है। महामहिम, हम जानते हैं कि आप जमीन से जुड़ करके और हमेशा आपने गरीब, गांव और किसान से लेकर के और ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान की बात की है। हम आपको पूरा देश ग्रामीण विकास मंत्रालय के रूप में भी जानता है। जब गांव को आपने महत्वपूर्ण सड़कों से जोड़ दिया था, तो आपको शहरी विकास के रूप में भी देश जानता है, जब आपने शहरों का कायाकल्प कर दिया था। आपको सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य मंत्री के रूप में भी देश ने जाना है, जब एक से एक अभिनव प्रयोग, नवाचार आप तब से करते चले आ रहे हैं। नए आइडियाज के साथ नई चीजें आपने हमेशा दी हैं, और अब राज्यसभा के यशस्वी सभापति के रूप में आप एक नया इतिहास गढ़ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे जब भी जो कार्यक्रम होते हैं, आपका हमको आशीर्वाद रहता है। और आज हम बड़े गर्व के साथ, जब अभी अमित खरे ने जिस बात को कहा है कि आज हमारे लिए नई शिक्षा नीति के पहला दिन है, जब परिवर्तन का ये क्षण आया है, और कल ही महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस मंत्रालय का नाम अधिसूचना कर दी है, और आज से आपके आशीर्वाद से अब ये शिक्षा मंत्रालय हो गया। और इसकी भी आपका आभार प्रकट कर रहा हूँ, राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट कर रहा हूँ, और देश के लोगों को मैं इस बात के लिए शुभकामना और बधाई भी देना चाहता हूँ कि जिस नई शिक्षा नीति को लेकर ताकत के साथ आई है, आज से उसका परिवर्तन शुरू हो गया। हमने केवल मंत्रालय का नाम नहीं बदला, बल्कि हमने नीतियों को भी बदला है, और इस देश को शिखर पर पहुंचाने की नीति का आज से तेजी से क्रियान्वयन हो जाएगा। मैं समझता हूं उस नीति का ये आज ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें महामहिम आपका हमको आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे बहुत ही अनन्य सहयोगी, और जिनका मुझे लगातार मार्गदर्शन भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है, माननीय राज्य मंत्री आदरणीय संजय धोत्रे जी, हमारे बहुत ही कर्मठ, जुझारू और विजनरी सचिव PS श्री अमित खरे जी, और अपर सचिव राकेश रंजन जी, आदरणीय डॉक्टर BBR मोहन रेड्डी जी, आपको हम सुन नहीं पाए, लेकिन आप हमको सुन रहे होंगे और आपका मार्गदर्शन दोबारा लेंगे। आप इस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, और हम जानते हैं कि आप बहुत ही विजनरी हैं और मिशनरी भी हैं। हमारे प्रोफेसर अनिल सुबुद्धे EICT के जो हमारे यशस्वी चेयरमैन हैं, और मैंने पीछे के समय में 1 वर्ष से लगातार देख रहा हूं कि श्रीमान महामहिम एक के बाद एक लगातार नए आइडियाज को लेकर के अनिल सुबुद्धे की टीम, जिसमें अभय जेरे जो चीफ इनोवेशन ऑफिसर हैं, और नए संस्करण, नई योजनाएं, पीछे के समय में बहुत परिवेश बदला है पूरे देश का। और जो हमसे जुड़े हैं हमारे सभी साथी भाई और बहनों, मैं इस अवसर पर, जबकि हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी आज दूसरे संस्करण की यहाँ पर ऐतिहासिक घोषणा कर रहे हैं, मैं इससे जुड़े, इस मिशन से जुड़े उन सभी प्रतिभागियों को
पूरे देश के उन सभी संस्थानों को और सभी छात्र छात्राओं को, उद्योगपतियों को मैं शुभकामना दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ कि ये हमारे लिए गौरव और ऐतिहासिक क्षण है जब हम एक के बाद एक नई प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो रैंकिंग है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का एक पथ प्रदर्शक नीतिगत ये पहल है जो छात्रों और संकाय के बीच नवाचार उद्यमिता विकास के प्रसार और उसके समर्थन से संबंधित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक में करने के लिए AICTE और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से ये अभिनव प्रयोग आगे बढ़ रहा है। मैम, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने तमाम क्षेत्रों में नवाचार और विकास के नए वातावरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण के पद चिन्हों पर चलते हुए शिक्षा मंत्रालय ने भारत में नवाचार को उच्च शिक्षा प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में नीतिगत पहल के लिए नए कार्यक्रम के अभिनव प्रयोग के साथ लगातार करता आ रहे और इसी तरह ये प्रारंभिक जो मंत्रालय की इनोवेशन सेल है जिसके प्रमुख अभय जेरे हैं, इसकी स्थापना की गई और ये सुनिश्चित करने की पहल की गई कि नवाचार और उद्यमिता का पारस्परिक गतिविधियां कैसे बन सकती हैं, हैकाथॉन को उच्च स्तर के संस्थानों से कैसे जोड़ा जा सकता है, इसके तरीकों को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और इन पहलों से जो ग्रास रूट है उनको इनोवेशन का माहौल कैसे हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में नीचे से लेकर के और ऊपर तक किस तरीके से ये हमारे जो महत्वपूर्ण संस्थान है नवाचार और उद्यमिता का आंदोलन के रूप में कैसे इसको विकसित कर सकते हैं, ये अटल रैंकिंग का विशेष महत्व है। मामून जैसे कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में हम नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई है। वैसे तो हम लगातार शोध और अनुसंधान की दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं। हमने इस पार्क के तहत दुनिया के शीर्ष 127 देशों के साथ हम पारस्परिक अनुसंधान कर रहे हैं। हम स्ट्राइड के तहत अंतर विषय शुरू कर रहे हैं, इम्प्रिंट है, इम्प्रेस है, स्टार्स है, तमाम क्षेत्रों में हम शोध और अनुसंधान को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा थी कि एक शोधात्मक अनुसंधानात्मक संस्कृति को कैसे बढ़ावा मिल सके और इसीलिए ये इसके विज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी की दृष्टि से इन चारों में NRF के तहत कैसे करके हम इन चारों विधाओं को आगे तेजी से बढ़ा सकते हैं और जो शोध करता है उसका जो अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान के अवसरों पर हम कैसे ध्यान केंद्रित करके उसको नीचे तक बढ़ा सकते हैं, ये भी इसका लक्ष्य है। व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने के लिए ये बहुत ही बेहद ईमानदारी का प्रयास है जिससे पूरी शिक्षा प्रणाली को और उन्नत करने का ही मौका मिलेगा। हमारे मौजूद शिक्षा जो प्रणाली है वो अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तो ये साहसिक कदम है जो उसके बीच में एक सूत्र बनेगा, एक सेतु का काम करेगा। मामून शिक्षा प्रणाली बहुत सारे लचीलेपन को हमने किया और जैसे कि आपको मालूम है कि जो हम नई शिक्षा नीति को लेकर के आए हैं उसमें सभी छात्रों को पहली बार खुलापन मिला है, उनको विषय की भी चुनने की आजादी है, सभी प्रकार उनको कौन सा क्षेत्र में बढ़ सक रहे हैं और यदि परिस्थिति बस तिरमन उनको बीच में छोड़ के जाना पड़ता है तो वो निराश नहीं होंगे। यदि 2 साल का वो कोई कोर्स कर रहा है, 4 साल का होना था लेकिन 2 ही साल में छोड़ के जाता है तो पहले वर्ष में उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, दूसरे वर्ष में उसको डिप्लोमा मिलेगा, फिर उसको डिग्री मिलेगी और क्रेडिट बैंक उसका बन रहा है। यदि वो छोड़कर दोबारा आना चाहता है तो फिर वहीं से वो शुरू करता है। डिजी लॉकस की व्यवस्था की बहुत ही अभिनव है छात्र के लिए, उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बिना किसी रोक टोक के ये पहली बार हम इन लचीलेपन को लाए हैं और इससे निश्चित रूप में जहां 100% स्कूली शिक्षा में GR बढ़ाएंगे वहां उच्च शिक्षा में 50% तक 2035 तक GR बढ़ाने का हमारा लक्ष्य, जिससे 3.5 करोड़ नए छात्रों को उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी मिलेगी, उनको मौका मिलेगा। और जैसे कि हमारा फोकस नवाचार पर रहा है और संज्ञानात्मक कौशल और डिजाइन सोच की प्रक्रियाओं में हम लगातार सुधार की दिशा में एक मजबूत मानसिकता का निर्माण हम
कैसे कर सकते हैं, ये उसकी कवायतें हैं। हमारे जो बच्चों में रटने की क्षमता न हो करके उस परंपरा से उसको छूट मिले, स्वतः स्फूर्त जो उसके अंदर की ऊर्जा है वो बाहर निकले और वो एक रिजल्ट के रूप में हमारे सामने दिखाई दे। आज के समय जब इनोवेशन और जो उद्यमिता है इसको मिल करके कैसे करके हम राष्ट्रीय स्तर पर एक नई तस्वीर को बढ़ा सकते हैं, और इसलिए 2018 में जो ये नवाचार की उपलब्धि पर इंस्टीट्यूट अटल रैंकिंग शुरू किया है, आज इसका दूसरा संस्करण इसकी सफलता का है। जब पीछे के समय में 400 कुछ रजिस्ट्रेशन हुई थी, आज 668 के काफी अच्छा, पहले की अपेक्षा 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई। और मुझे लगता है कि आप संस्थान बहुत तेजी से इससे जुड़ेंगे, क्योंकि भारत दुनिया के तकनीकी रूप से हम अग्रणी देश के रूप में जाने जाएं, ये हमारी पूरी ताकत के साथ ये प्रयास है। और हमने अपने प्रयासों को प्रतिबिंबित भी किया है। उपलब्धियों का जो ये उत्सव है उसको मनाने के पीछे भी हमारी यही हमारी मंशा रही है। और इस साल जो पिछले साल से जो वृद्धि हुई है, मैं देश के सभी अन्य संस्थानों से भी अनुरोध कर रहा हूं कि वो बहुत तेजी से जुड़े और जो उसके अंदर छात्र है वो उसको पूरे विकास का मौका दें। उन संस्थानों के लिए मैं शुभकामना देना चाहता हूं। और जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ये पहल है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि नए भारत का निर्माण करना है, ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो, श्रेष्ठ हो, एक और आत्मनिर्भर भारत की जो दिशा है वो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप के साथ मिलकर के ये जो अटल नवाचार रैंकिंग है ये उसकी आधारशिला बनेगा। जो बच्चे के मन में विचार आ रहा है वो प्रकटीकरण होगा, वो समस्याओं के समाधान की दिशा में एक कदम आगे जाएगा। इसलिए नवाचार के साथ आगे बढ़ते हुए स्टार्टअप तक की जाने की यात्रा का ये मूल्यांकन है, जिसका आज दूसरे संस्करण का हम आपके कर कमलों से यहाँ पर आज लोकार्पण कर रहे हैं। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हमेशा और हमेशा से आपको आशीर्वाद दिया है। ये आज का दिन भी हमारे लिए एक उत्सव से कम नहीं है, जब हमारे जो छात्र हैं वो नवाचार के साथ उन समस्याओं के समाधान के लिए आगे आ रहे हैं। एक बार फिर मैं हृदय की गहराई से मामई में आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक धन्यवाद आदरणीय शिक्षा मंत्री जी। नाउ वी मूव ऑन टू द मूवमेंट which everyone has been desperately waiting for, the announcement of results. Mohit, whether my screen is visible? Yes, everything is visible. You are loud and clear, Abhay, please. Thank you, Honorable Vice President Venkaiah Naidu ji. So with your permission, I would like to proceed and go ahead and show the results. Before getting into results, I would like to inform all the institutions participating in this ARIA ranking that each one of them will get a performance card on various parameters where their performance will be compared to the leader or the winning institute in their category. So this are the various parameters on which the performance card will be issued to all the participating 674 institutions. Now we move to first category, which is exclusively for women, and the winner in these two categories, in this category are the two institutions. The winner is Avinash Lingam Institute of Home Sciences and Higher Education for Women, Tamil Nadu. They are rank 1. And Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, New Delhi, are rank 2. In this category, we have only top 2 ranks. Now we move to the second category, which is private or self-financed institutions. And the winner in this category is SR Engineering College, Telangana, and the runner-up is GS Raisoni College of Engineering, Nagpur. In this category,
announcing 5 ranks, and they are displayed as follows. The second rank is also shared by Sri Krishna College of Engineering and Technology, Tamil Nadu. Now we move to third category, which is private universities. Earlier category was institutes. This category is universities. And the winner of this category is Kalinga Institute of Industrial Technology, Odisha, followed by SRM Institute of Science and Technology at number 2, Tamil Nadu, and Vellore Institute of Technology at number 3. Moving to the fourth category, this is government-aided universities, and the winner in this category is Institute of Chemical Technology, Mumbai, Maharashtra, followed by Punjab University, Chandigarh. The fifth category is government-aided colleges and institutes, and the winner in this category is College of Engineering, Pune, followed by BES College of Engineering, Karnataka, and in third place, you have Coimbatore Institute of Technology, Tamil Nadu. Finally, we will go to the biggest and the most important category, which is Institute of National Importance, Central Universities, CFTIs, and in this category, we are announcing top 10 rank because the competition was immense, and the winner in this category is Indian Institute of Technology, Madras, Chennai. Rank 2 goes to Indian Institute of Technology, Bombay, Mumbai. Rank 3 goes to Indian Institute of Technology, Delhi, New Delhi. And the fourth rank goes to Indian Institute of Science, Bangalore. And the fifth rank goes to Indian Institute of Technology, Kharagpur. All these rankings will be soon available on our ARIA website. So we will request all the participants to check their rankings on ARIA website. And as I said earlier, soon each and every participating college or institute will get a performance card and certificate will be shared with them. Thank you. Thank you very much, Mohit. We can proceed. Urban development and poverty alleviation, amongst many other ministries, an avid speaker, and has been a relentless supporter for innovation, especially the cause of the farmers and the development of rural areas. I would request His Excellency, Vice President Sir, to please shower his blessings on us. Sir, please. मित्रों, इस अवसर पर मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री इनोवेशन सेल तथा एआईसीटी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने पिछले वर्ष से संस्थाओं में इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए इस अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स का शुरुआत किया है। इस वर्ष महामारी के कारण आए तमाम व्यवधानों के बावजूद अपने सभी सूचनाएं एकत्र करके उनका सही विश्लेषण कर यह सूची बनाने का कठिन काम सफलतापूर्वक पूरा किया है। आपका प्रयास अभिनंदनीय है। मुझे मालूम है कि इस बंदी के दौरान 2 ऑनलाइन हैकाथॉन, आइडियाथॉन और समाधान भी आयोजित किए गए हैं। श्री रमेश पोखरियाल जी, श्री संजय जोत्रे जी, अमित खरे जी, अनिल सहस्रबुद्धे जी, श्री मोहन रेड्डी गारू, Dr. Abhay Jere, Vice Chancellors, Directors, Principals of various institutions, and also students. I am really very happy to be amidst you all today
for this August prestigious innovation festival. I call it as a festival. As was rightly emphasized by the Minister, this should become, in the coming days, a people's movement. Innovation should become a movement. That is the need of the hour. During the last 5 years, India has made considerable progress in the field of innovation and entrepreneurship. No doubt about it. At the world level, we have moved from 81st position to 52nd position in Global Innovation Index ranking. It is indeed a matter of great satisfaction that we have third largest startup ecosystems in the world today. It is heartening to see that the government has taken a number of initiatives to inculcate the spirit of innovation among students from a young age. The Prime Minister is very keen. Over 2 million students between grade 6th to 12th are working in more than 5,100 Atal Tinkering Labs established across the country under the Atal Innovation Mission. I have an opportunity to visit some of them. Innovation has always been the key defining feature of human progress. Inventions, discoveries, creative artworks, architectural marvels, and experimentation in different fields of human endeavor have enriched human values from time to time. India has its own illustrious history of innovations spanning at least 20 centuries, right from the invention of zero and the decimal system by renowned mathematicians like Pingala, Aryabhatta and Brahmagupta. There was a time when India was known as Vishwaguru and students from many countries came to study at our universities. Nalanda, that was some of the great centers of learning. We must regain that intellectual leadership. We must once again emerge as a global hub of learning and innovation. We have to tap into the highly talented youth population, which is brimming with the new ideas, a passion for experimentation, and willingness to forge a new path. It is these young people studying many of our colleges and universities who will define what our country's future will be. It is these youths that need encouragement, felicitation, and recognition. They must be given the guidance and freedom to explore new frontiers. Proper guidance is the need of the hour. There is hidden talent in every one of our youngsters. We need to recognize it, we need to encourage it, we need to promote it. That is the need of the hour. Our education institutions, especially institutions of higher education, must reinvent themselves to create these essential conditions for innovation to thrive, for creativity to grow. I'm happy to note that the new National Education Policy has a sharp focus on this aspect and has made a number of recommendations that will foster innovation. It has outlined a new vision that can vastly improve the quality of teaching and learning as well as research. Moving away from rote learning, the policy lays great emphasis on comprehension, critical thinking, analysis, and joy of discovering new facets of the world of knowledge. It's a joy to discover new facets of the world knowledge. It seeks to break the silos and connect different disciplines through multidisciplinary learning. Enabling this connection between the fragments of information and evidence is truly vital for our innovation. It is this ability to question and seek answers that lies at the foundation of innovation. It is the childlike curiosity that can trigger the creative impulse. Our educational ecosystem must constantly nurture this innate spirit of inquiry and innovative problem solving. Utter ranking of institutions on innovation achievements is a major step to recognize excellence in creating this conducive environment to innovate
It was rightly named after the great son of this great country, Atal Bihari Vajpayee. Because Atal Bihari Vajpayee is really responsible for a connectivity revolution, for really putting into practice a lot of reforms. So it was rightly named after this great son of our great country. Our Prime Minister is accelerating reforms. Reform, perform, transform is the mantra he has given. So everyone working in every field should think on those three aspects. Reform, perform, and transform. Ranking institutions through a transparent process on certain key parameters gives a well-deserved recognition to the efforts of the educational leaders who are managing these institutions and the transformational instructional leaders who are teaching students in the classroom as well as guiding them through the research process. I appreciate that innovative learning methods and courses is one of the parameters to calculate this Atal ranking. It is the classrooms and the laboratories, the projects and the learning experiments that will alter the educational landscape of our country. It is a dream articulated in the National Education Policy. The key responsibility to make this dream come true lies with the educators and educational managers. That's why we used to say education is a mission. It is not for commission. Nobody should give any remission and do not do any omission. That is the passion for the mission. If you have that passion and take this as a mission and then commission all your innate strengths, you can really move forward because India is a land of wisdom, knowledge. Our forefathers has given us that one. And we must pass on to our younger generation. The Prime Minister Narendra Bhai Modi ji has rightly given a timely vision of self-reliant India through his call for Atmanirbhara Bharat. Atmanirbhara Bharat, self-reliant India. Mere confidence will not suffice. You have to be self-reliant. Self-reliance requires us to innovate, to seek implementable solutions for developmental challenges. Challenges are coming. And to create a favorable environment for experimentation. India's higher education system should play the role of an enabler and force multiplier to drive Indian innovation and startup ecosystem. Greater emphasis is being laid on building a knowledge society through promotion of science, research and excellence. There could be concerted efforts to inculcate the culture of innovation and the entrepreneurship among our students to make them out-of-box thinkers, create opportunities, creative problem solvers, entrepreneurs and job creators rather than job seekers. The youth of the country must be motivated to join the developmental path more aggressively, while our scientists and researchers must come up with innovations and solutions. They must focus on making the lives of the people more comfortable, happy. Since science is very important, science must also be used to make agriculture more productive and create greater wealth for the farmers. We have Ramesh, Pokhriyal ji, Sanjay ji, Amit Khare, and also chairman of AICT, and also Mr. Mohan Reddy, and your innovation officer, Dr. Abhay Jare, a lot of vice chancellors. I would like to share an important thought with all of you. That is, we must focus more and more on agriculture, which is our basic culture. Even today, 52% of our people are depending on agriculture. So all your research, all your technology should be focused on agriculture also. See, we are coming out with so many technologies.
new ideas, new innovations. So much progress is being made, undoubtedly. Technology is making forward march. But the problems of the farmers, they require attention because they always live in tension in the rural area. See, today you read the newspapers, tomato prices have fallen. Production has increased. Potato prices have fallen. Production has increased. Onion prices have fallen. Production has increased. The reason is that these are all perishable items. How to preserve them for a longer period? A new innovation should come. Cold storage. And also how to keep that through radiation. Can you keep them for a longer period? How do you transport them from one place to another place? Then second, information to every farmer at his fingertips. Mohan Reddy garu. Information to the farmers. Nowadays, you have a cell phone. If not smartphone, cell phone is there. So how do you pass on the information? What is the price of onion in Nasik? What is the price of onion in Delhi? You remember? Once the government has gone because of onion price in Delhi. The producer is not getting remunerative price and the consumer has to pay higher price in the same country. Then information with confirmation is more than remuneration. If the farmer knows that the price of onion in Delhi is this much and then is being offered this much, and if he has a ability to have storage capacity, he will wait and he will get remunerative price and the middleman cannot exploit him. This is a practical issue. I know that I am in a larger function, but I am focusing my attention on this very important issue. The farmers of the country are agitated. People are leaving agriculture because it's not remunerative. They are ready to put up hard work. See, in this pandemic, one sector which is performing in an excellent manner, you can call it as a silver lining. Agriculture production has gone up. With all these adverse conditions, the fear, the COVID, the restrictions, all these things, but still everywhere the news comes, the paddy production, the sowing has gone up, wheat has gone up, pulses have gone up and on. So really hats off to the farmers in spite of all these adverse conditions. They are working hard. They are the backbone of our country. We must come to their aid. The youngsters who are innovating, who are coming with new ideas, please focus your enough attention on agriculture also. What you are doing is good. I've seen some universities like our Agriculture University, Haryana, they are also there in the list. Agriculture Ministry, Krishi Mantralay, Shiksha Mantralay, our food processing, and then your AICTE, because you are the guide, All India Council for Technical Education, and also ICAR, Indian Council for Agricultural Research, and the universities. You must all work in unison. Focus your attention on this issue. Motivate the technology educators, the students, to focus special attention on this aspect, because we have food security, no doubt, but we can provide food for the entire world. That is our capacity. The Prime Minister also the other day added, not only make in India, make for the world. So we must take lead in this aspect also. And if you go by small things, potato price less, potato chips price high. Why? Because simple. And we are importing potato chips. Can't we make a good potato chips? And we are producing smart chips. We are now we have been thinking and we have been importing potato chips, tomato sauce, ketchup.
whatever name you give, the branding and all, you are importing that one also. Can't we focus our attention on these aspects? Very important, day-to-day requirements, good products. So I would like this occasion to tell all our people concerned with various forms of education, please pay more attention and more focus on agriculture. As I told you, this is our basic culture. The Minister of Education, rightly named as education, educating. Education and learning must be a continuous process. Learn more so that you can earn more and make people's life more comfortable. So this was rightly named. It has taken a big leap forward with the formulation of new education policy. This can